are eager to break apart. तो फ्लोरीन का डिसोसिएशन क्या हो जाता है यहाँ पे, आसान हो जाता है. Okay, in comparison to what? In comparison to chlorine. Chlorine also has a single bond. It also has 3 lone pair electrons, but these 3 lone pair electrons are in the 3p. है ना? Chlorine कौन से period में? Third period में है, right? So all of these lone pair electrons are in the 3p, and that is why chlorine size भी बड़ा है. The size of chlorine is larger. That is why it can accommodate 3 lone pair electrons easily in comparison to fluorine. Okay, so that is why this fluorine bond is easy to break, and this is difficult to break in दोनों के comparison में. So what would be the answer? The answer would be chlorine. All of you got this? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. Ashrit, you are here, na? Yes, sir. Sir, we can also conclude like this: ki it is directly proportional to dipole moment, because Dipole there moment दोनों में also. zero है. Dipole Okay. moment for both of them is zero, ना? Electronegativity दोनों का तो same है. So the electron pair जो shared है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से equally share कर रहे हैं, because electronegativity difference is zero, and if electronegativity difference is zero, there is no question of dipole moment, ना? Okay, sir. है ना? Yes. Understood कि नहीं? Yes, sir. Okay, where are you from, Ashrit? Yes, sir. Where are you from? Sir, I'm from Hyderabad. You stay also in Hyderabad, or you stay? No, I stay in Saudi Arabia. Saudi, which city? Jubail. Which school? ISJ. ISJ. Yes. J for Jubail. Yes, sir. Or Jed. Then there is one J for Jeddah also. Yes, sir. Okay. So try this question. You just need to calculate the number of lone pair electrons on the central atom. For number of lone pair electrons, I'm going to give you guys how many minutes? Let us suppose 3 minutes. Okay. Try this. Uske baad I will explain it. OneNote should also have a timer. Here we don't have any timer. I think you will get the answer if you just got this A and B. अगर इन दोनों का आपने देख लिया तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा. Okay, 1.5 minutes more. See, there is no harm if you are not able to do this question. Okay, don't worry. Okay, Marita. Yeah, I think that is right, Marita. Yes, Krishna, that is correct. See, very good. कृष्णा, आपने कुछ पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग इससे पहले, क्लास से पहले? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. Marita, what about you? You read some chemical bonding before the class? Not right before, sir. Not right before, लेकिन नहीं मतलब after your board examination 11th के बाद आपने chemical bonding पढ़ी है फिर से? Yes, sir. For my first day, I did go through. अच्छा, for the first day you did go through. Okay.
Okay. So let us see here. In IF7, okay, in IF7, how will we calculate the number of lone pair electrons? First of all, what is the number of valence electron in iodine? The number of valence electron in iodine, it is going to be how much? Please tell me, guys. जिन लोगों ने आंसर किया वो लोग, बाकी लोग बताएं. Priya, tell me what would be the number of valence electron on iodine? Yes, Priya. Any idea? No. Adriel, tell me number of lone pair number of valence electron in iodine. Yes, Adriel. Ashrit, tell me number of valence electron in iodine. Adriel, correct. Very good. Okay. See, so whatever the group number is there, na, group number kya hai iodine ka? Iodine's group number is 17. So you just take that last digit 7. 7 is the valence electron. And how many surrounding atoms do we have here? Surrounding atoms we have here is 7. So 7 minus 7 into the valency of the surrounding atoms. Valency kya hai surrounding atom ki? The valency of surrounding atom is 1. Hai na? Fluorine can make only one bond, right? Fluorine can make only one bond. So 7 into 1, ye kya ho jayega? This is going to be 7 minus 7, that is equal to 0. Kya ho gaya? So A ka 4 hai. Okay. Hamza and Rehan, you just joined, na? Yeah, okay. See, I hope you saw the message from Learnivio. The timings have been shifted to 15 minutes earlier, right? All of you got the right time, no? I think आपको मिला होगा 2:15, right? ठीक है, तो 2:15 से class started. Okay. तो A का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Similarly for ICl4 negative. Now in iodine, what do we have? We have 7 valence electron. Minus, what do we have? We have 4 chlorine. 4 into 1, because its valency is 1, it is going to make one bond. Now there is also a negative sign. That means they have added an electron. So I will add one more electron like this. So 7 minus 4 plus 1. Kitna ho jayega? 7 minus 4, 3 plus 1. That is equal to how much? That is equal to 4 electrons. 4 electrons means 2 pair. तो B का आंसर क्या हो जाएगा? B का आंसर हो जाएगा आपके पास 2 pair. So I think A का 4 and B का 3. C is the correct answer. है ना? बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है इस तरह का. So please write this down. Guys, we have just started chemical bonding, है ना? Chemical bonding में भी हमने ना कुछ theory नहीं बताई. अभी क्या चल रहा है? It is, we are just taking something from the atomic structure, the number of valence electron, ठीक है? And what type of orbital are going to make bond, those kind of things only. Write the next question. Same question. Number of lone pair electrons in the central atom of SCl2, O3, ClF3, SF6. Always look at the option first of all. ठीक है ना? ऑप्शन आप जब देखिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि इनमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा चूज करना है. ओके Marita, let me see. Yeah, I think that is correct. Yeah. Yes, Marita, very good. Now, let me give you a hint यहाँ पे, ठीक है ना, कि किस तरह से आप देखिएगा. Here we have A, B, C, D. तो सबसे पहले किसका देखेंगे? देखिए 0, 0, 0, 2, 1, 2. Now, if I calculate the number of lone pair electrons for A, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? Either 2 वाला B और D ऑप्शन बचेगा, या फिर सीधा हमको A और C में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको हम टिक कर देंगे. Now, for SCl2, what will be the, for SCl2, tell me what is the number of lone pair electrons? How are we going to calculate? How many valence electrons are there for sulfur? How many valence electrons for sulfur? Please tell me, guys. 6. 6. 6. Very good. Minus
chlorine, that is 2 into 1, right? So 6 minus 2 is equal to how much? 4. Now this is 4 electrons. The pair will be how much? The pair will be 2. So 6 minus 2 by 2 भी कर देते हो आपको सीधा आंसर मिल जाता. Now my answer is either B or D. Now please see, अगर हम O3 का निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, because here also we have 1, here also we have 1. Now what we can calculate? We can either calculate ClF3 or we can calculate SF6. SF6 ही calculate करते हैं because sulfur का एक बार हमने calculate कर दिया है. तो 6 minus 6 for SF6 we are calculating, divide by 2, that is equal to 0. तो option क्या हो जाएगा? B. Okay. So we don't have to calculate the number of lone pair electrons for all of these 4. आपको सिर्फ 2 का calculate करना था यहाँ पे. Please write this down. आंसर समझ में आ रहा है आपको? Yes. प्रिया आपको समझ में आ रहा है? Sir, how to find O3's lone pair? For O3 what you have to do, tell me. O3 के लिए आपको क्या ये आना चाहिए, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना? बेसिकली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? बेसिक है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर. Now in O3 you have to know, जिस तरह से हमको पता है ना, यहाँ पे क्लोरीन जो है, it is making how many bonds? It is making only 1 bond, right? It is not making 2 bond. So O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक होता है डेटिव बॉन्ड, right? And then we have double bond O. कितना इलेक्ट्रॉन बच गया अब इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 1 लोन पेयर. Got it? Yes, sir. The basic is the structure, Lewis dot structure. So now let's look at the concept of steric number. Okay. Now what is steric number? Steric number tells you, and it is going to help you in calculating the hybridization, electronic geometry, and after electronic geometry, you can also determine the structure of a particular species. Now, steric number, when it is 2, the hybridization is going to be sp, the electronic geometry is going to be linear, and you have only one possibility, that is a linear structure. Now, when you have steric number 3 and hybridization is sp2, the electronic geometry is going to be trigonal planar. Now please see, in trigonal planar you have this type of structure. Now these are not bonds, please remember, these are just electron pairs. Now these can be involved in bonding or they can be lone pair also. Now when you have 0 lone pair, the electronic geometry and the structures are same. The electronic geometry and structures are same. But as soon as you get 1 lone pair electron, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? You will have 1 lone pair electron and the other will be what? Bonds. ये दोनों क्या हो जाएंगे? Bonds हो जाएंगे. यहाँ पे जब 0 lone pairs, all of them are what? All of these are bonds in the structure. Now for this structure, the name is bent. Okay. So if you add 1 lone pair, you will get bent structure in trigonal planar. But the basic is you have to know what is steric number. And how will you calculate steric number? The number of surrounding atoms plus the number of lone pairs. That's it. Number of surrounding atom plus the number of lone pair electrons. Next, Sir, can you explain once again, sir? Which one? This bent concept. Bent concept. This is trigonal planar. Okay? Yes, Ashrit? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, all of these, at the first point, we are taking all of them are bonds. That means it will have 3 surrounding atoms. Correct? Yes, sir. अब आपके पास है एक lone pair and 2 surrounding atom. So this is lone pair and 2 surrounding atoms. Now, whenever you are going to talk about structure, not electronic geometry tells you about the placements of electron, where are the electrons and what geometry they are making up. But in structure, आपको क्या दिखेगा? You will neither see bond, neither you will see anything. So आपको बस दिखेगा A यहाँ पे है, B यहाँ पे और B यहाँ पे. So what kind of structure is this? This is bent structure, right? Or Yes, angular sir. structure. Got it? Yes. Yes, sir. Similarly, when you have the steric number 3 and hybridization sp2, okay, we have discussed this. When you have steric number 4, the hybridization is sp3 and the electronic geometry is tetrahedral. Now in tetrahedral, when you have 0 lone pair electrons, the geometry and the structures are going to be same. Now you add 1 lone pair electron, I will get, this is lone pair, this one is now lone pair, and we have a pyramidal structure. Now you can add 1 more lone pair, and you will get again a bent structure. Okay, you'll get, this is for CH4, if you remember from class 11, this is NH3 and this is H2O.
So CH4 mein you have no lone pair electrons. In NH3 you have one lone pair electron, 3 surrounding atoms. Steric number will be 3 plus 1, that is equal to 4. In H2O you have 2 lone pair electrons and 2 surrounding atoms, 2 plus 2, that is equal to 4. Okay, so these are the structures. So in sp3 tetrahedral, you add one lone pair, you will get trigonal pyramidal. You add one more lone pair, you will get bent structure. Now, this 4 is dsp2. Rarely you will see questions from dsp2. Next is fifth one, that is sp3d, trigonal bipyramidal. In trigonal bipyramidal, this is important, please remember this one. In trigonal bipyramidal, you have two different types of bonds. You have the equatorial bond, which are these three bonds, which are in one plane, and then you have the axial bonds. Now, the axial bonds are 90-degree with 3 of the equatorial ones, and that is why these are longer. Axials are longer. Okay, axial are longer, and whenever you have to put electron pairs, that is in form of lone pair electrons, you will always put at the equatorial position, because equatorial position may, this is 90-degree and this is 90-degree. So it is only repelled by 2 bonds. It is only repelled by 2 bonds. But if you are going to put a lone pair electron in the axial position, it will be repelled by 3 bonds. Okay. So less repulsion ko hum log favor karte hain, and less repulsion is found in the equatorial position. So if you are going to put equatorial position mein one lone pair, then you are going to get a seesaw type of structure. है ना? जो बचपन में बैठ के खेलते थे. This is seesaw structure. Now, if there are 2 lone pair electrons, then you put them here, and you will get what? You will get T type of shape, right? This is T. Okay, so this is T shape. So these are the 2 things that you have to remember. And if you have another lone pair electrons, it will go here, and you will get what? You will get a linear structure. Okay, so when you have trigonal pyramidal electronic geometry, hybridization is sp3d. You don't have any lone pair electrons. The electronic geometry and the structures are same. That is trigonal bipyramidal. If you add one lone pair, you will get seesaw. If you add one more lone pair, you will get T shape. If you add one more lone pair, you will get linear structure. Now in sp3d, that is steric number 6, octahedral, when you don't have any lone pair, the electronic geometry and structure is going to be same. If you add one lone pair, you will get square pyramidal. Let's look at square pyramidal. Now you add, all of the bonds are same here. Okay, all of the bonds are same. You get a lone pair here. These 4 are in a plane. So the base is what? It is a square. And then you have a pyramid here. Okay, so this is square pyramidal. Now, if you add one more lone pair, then it will become square plane. Add one lone pair here, another lone pair here, and this is now what? This is now square planar structure. Okay, so please write this thing down. रिहान, आपको समझ में आ रहा है? I did not hear your voice single time. Yeah. Yes, okay. How was your boards exam, Rehan? That's good. Please let me know once you're done writing this.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Moving towards the first question. Amongst the following, the number of species having linear shape is. Try this. Actually, let me do this one. Okay. XEF2. First of all, what do we have? XEF2. XEF2 में आप बताइए, we have valence electron is equal to how much? 8 minus how many bonding pairs? How many surrounding atoms do we have? We have 2 surrounding atoms. That means it is equal to what? 6, right? 6 मतलब कितना हो गया? Divide by 2, that is equal to 3. Now we have 3 lone pair electrons. So 3 plus 2, that is equal to 5. ठीक है? 3 lone pair electrons and 2 are what? Surrounding atoms. 5 मतलब sp3d. sp3d में trigonal bipyramidal. And how many lone pairs do we have? We have 3 lone pairs. That means it is going to be what? Linear हो जाएगा? Yes or no? Please tell me. एक लोन पेयर में सीसॉ, दूसरे लोन पेयर में टी शेप, तीसरे लोन पेयर में लीनियर. Yes or no? Please tell me. Understood this? Yes, sir. ठीक है. Next देखिए. I3 negative. Okay, what do we have? We have I3 positive. Iodine में कितना होता है? Iodine में we have 7. Then we have how many surrounding atoms? Surrounding atom is 2, and then 1 electron we have already removed, so -1. So this is going to give me how much? 7 minus 3, that is equal to 4 divided by 2. That is equal to 2. So here we have 2 lone pair plus 2 surrounding. कितना आ गया ये? Tell me. 2 lone pair plus 2 surrounding. It is equal to what? Steric number is equal to what? Steric number will be 4. ठीक है? तो 4 में आप देखिए, चाहे sp3 हो चाहे dsp2 हो, कहीं पे भी आपको लीनियर नजर आ रहा है? Tell me. No, नहीं ना, तो ये होगा ही नहीं. अब आगे आपको देखना ही नहीं है. ठीक है? You don't have to see आगे कुछ यहाँ पे. So this is not linear. अब इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. Then only you could answer this. What is this? This is C3O2. C3O2 का जो स्ट्रक्चर होता है, the only value structure that you can make is C double bond C, double bond C, single double bond O, and double bond O. So this complete thing is linear. Okay, this complete thing is linear यहाँ पे. Next we have I3 negative. I3 negative में क्या होगा? We have 7 minus 2 plus 1. This is equal to 7 minus 2, 5 plus 1, 6 divided by 3. That is divided by 2. That is equal to 3. Now here we have 3 lone pair and 2 surrounding. That means it is equal to 5. 5 में same चीज है, sp3d trigonal bipyramidal, 3 lone pair electrons. That is why it is going to be linear. So I3 negative is also linear. CO2 linear है या नहीं है बताइए? Carbon dioxide is linear, yes or no? no. No, why not? देखिए, carbon dioxide, carbon. How many valence electron? 4. Minus. Surrounding atom is 2. What is the valency of oxygen? Oxygen की valency होती है इतनी 2. Yes or no? That means it is equal to 0. Correct guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. 0 lone pair plus 2 surrounding atom. That means it is equal to what? Steric number is 2. Steric number 2 में तो सिर्फ और सिर्फ linear ही होता है. Steric number 2 में सिर्फ linear होता है. So CO2 is again linear. What about SO2 now? SO2 में सब कुछ same है, but this is now 6. Right? This is 6 now. So 6 minus 4, it is equal to 2. 6 minus 4, it is equal to 2. Now we have 2 divided by 2 हो जाएगा. That means it is equal to 1 lone pair. 1 lone pair plus 2 surrounding atom क्या हो गया? 3. Right? 3 में कहीं पे linear आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये हो ही नहीं सकता है. SO2 is not linear.
Next we have BeCl2. BeCl2. How many valence electron in beryllium? Tell me guys, number of valence electron in beryllium. Number of valence electron in beryllium is कौन से ग्रुप में है? बेमक्का सल्फर. हाँ, very good. 2 minus 2, that is equal to 0. That means we have 2 surrounding atoms plus 0 lone pair. This is 2. So hybridization is sp, और sp में सिर्फ और सिर्फ linear ही होता है. Now when we have BCl2 negative, now BCl2 negative is going to give you what? Boron में number of valence electron is equal to 3 minus chlorine का 2 plus 1 because of the negative charge. एक electron हमने add कर दिया. So this is equal to how much? 3 minus 2, it is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 2. This whole divided by 2. 2 divided by 2, that is equal to 1 lone pair. Now we have 2 surrounding atom plus 1 lone pair. That means it is what? sp2 trigonal planar. उसमें कभी linear नहीं हो सकता. Okay, we have 3. Steric number is equal to 3 ना? और 3 में कभी भी linear नहीं है. So BCl2 is not going to be there. So how many? इस C3O2 वाला भी था. 1 2 3 4 5. So 5 is the correct answer. Okay, chaliए. Try this one. You need to just see the number of lone pair electrons. वो कहाँ से निकलेगा? Valence electron minus surrounding atoms. Consider PF6, BRF5, PCl3, SF6, IClF4 negative, ClF3, IF5. Amongst the above molecules or ions, the number of molecules or ions having sp3d2 hybridization. That means steric number कितना होना चाहिए sp3d2 के लिए बताइए? What should be the steric number? 6 है ना? चलिए, try this one. ये हो जाना चाहिए. The things that you can ask me is valence electron of a particular central atom. आप हमसे पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको. And fluorine, all of them are going to make only one bond. ठीक है? सबकी वैलेंसी, सराउंडिंग एटम्स की वैलेंसी कितनी है? 1 है. All of you know what is the valence electrons for phosphorus? Tell me. Valence electron for phosphorus is 5. phosphorus के लिए होता है 5. और एक है यहाँ पे सल्फर. सल्फर के लिए कितना होता है? 6. सल्फर के लिए 6. एंड एनी हैलोजन, हैलोजन को 1 से डिनोट किया जाता है, 7 होता है. ठीक है? You have the valence electron, you have the surrounding atom. Please calculate कीजिए steric number. 6 किस किस का है? प्रिया, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू. ओके प्रिया? Yes. Sir, can you zoom in a bit? हाँ, sure. That's fine, Adrian. Yes, sir.
Okay, tell me guys, PF5 is it sp3d2? Yes or no? Yes, sir. No, sir. Yes, Priya, tell me, sp3d2 hai PF5? No, sir. Okay, what is the hybridization for PF5? Tell me, what is the steric number for PF5? 0. देखिए, चलिए बताइए प्रिया, आप कैसे कर रहे थे? Steric number is equal to what? Tell me, Priya. So the valence of P is हमने फॉर्मूला लिखाया है ना? I have given you the formula. Hope you wrote it. देख के बताइए, what is the steric number? Steric number is equal to. Did you write the formula, Priya? number of spatial atoms, number of lone pairs. Surrounding atoms. Number of surrounding atoms, है ना? ठीक है? Number of surrounding atoms plus number of lone pairs. Number of lone pairs. Okay. So in PF5, what is this number of surrounding atom? 5. जोर से बोलिए, please. A bit louder. 5. Yeah, thank you. Okay. And how will we calculate the lone pairs? The valence of P minus. So valence कितना है? What is the valence electron for phosphorus? Phosphorus it's 5 minus 5 Minus into 1. So it will be 0. This will be 0. So steric number is equal to 5, है ना? And हमें steric number क्या चाहिए? 6 चाहिए. ठीक है? Yes. Okay. BRF5 में है या नहीं है बताइए? BRF5 is it steric number 6? Yes or no? Yes, Priya. Yes, sir. Because It is. because the number of lone pair is 2. Number of lone pair is 1. 1 and surrounding atom is 5, है ना? Surrounding 5, yes. ठीक है. PCl3 में होगा नहीं होगा? No. क्या आ रहा है PCl3 में आपका? What is the hybridization that you are getting for PCl3? So the won't it be sp3d? नहीं. PCl3 में 5 minus 3 that upon 2 that is equal to 1. एक lone pair and 3 surrounding, right? Yes or no? Yes. Was it too fast? 5 valence electron minus the number of surrounding atoms divided by 2 is going to give you valence electron that is equal to 1. 3 plus 1 is going to give you 4 that is equal to the steric number 4 and sp3. है ना? तो ये नहीं होगा. आपने सही कहा था नहीं होगा, but I was asking the reason. SF6, sp3d2, yes, sp3d2, yes or no? Yes, sir. Because Okay. B0 ठीक. is. And ICl4 negative. ICl4 negative कैसे करेंगे? Iodine, number of valence electron in iodine is equal to 7 minus number of surrounding atom is equal to 4 plus 1 because we have added one more electron. Now this is going to give me how much? Divide by 2. कितना हो जाएगा ये? 8 minus 4 is equal to 4 by 2, that is equal to 2 lone pair electrons. Surrounding atom is 4 plus 2, that is equal to 6. तो steric number कितना हो गया? 6 हो गया. So ICl4 negative is going to be one of those ions which is having sp3d2 hybridization. ClF3. बाकी लोग बताएं अब ClF3. Yes, guys, tell me ClF3, is it sp3d2? Yes or no? Sir, it's 5. SN number will be 5, right? Steric number is 5, so it is not going to be. What about IF5? Is IF5 going to be? It won't be. IF5 नहीं होगा? No, sir, because
I is no, it won't be 7 7 minus 5. 5 divided by 2, that is equal to 1. 5 is the number of surrounding atom and 1 is the number of lone pair electron, that is going to give you 6. Yes, Ashrit, it's going to be Oh, okay. हाँ, sorry. ठीक है, कितने हो गए फिर हमारे पास? आंसर क्या होगा इंटीजर में? आंसर वुड बी 4, है ना? BRF 5, SF6, ICLF 4 नेगेटिव, IF 5. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 4? किसी को मिला? अभी तक नहीं मिला. No one got. Okay, चलिए. Try this one. यहाँ से आपको देखना है, पहले A देखिए आप, and then first you will look at, will calculate for A. उसके बाद किसके लिए कैलकुलेट कीजिएगा? B के लिए कीजिएगा तब भी 2 ऑप्शन है, C के लिए कीजिएगा तब भी 2 ऑप्शन है, D के लिए कीजिएगा तब भी 2 ऑप्शन है, राइट? सो आई थिंक B वुड बी बेटर चॉइस, है ना? A और B के बाद आपके पास आखिरी चॉइस हो सकता है C और D में, फिर A B C लगातार करना पड़ेगा आप. एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड फॉर 3. B में मिल सकता है सीधा सीधा आंसर, बट आई डोंट नो. XeO3. Please remember, what is the number of valence electron Xe? The valence electron is 8 and the valency of oxygen is 2. Okay. पहले वाले के लिए हम करके आपको बता दे रहे हैं. Here we have the number of valence electron is equal to 8 minus the number of surrounding atom, it is equal to 3 into 2, that is the valency. This is going to give you, divide by 2 कर देंगे, lone pair electron मिल जाएगा. 8 minus 6, that is equal to 2, divided by 2, that is equal to 1. So we have 1 lone pair electrons and 3. We have 1 lone pair electron and 3 surrounding atoms. So 3 plus 1, it is going to give you 4, that is sp3. sp3 कहाँ पे है? sp3 है 2 में, है ना? हाँ, तो A और B में से कोई ऑप्शन होगा? A सर. A होगा. XeF2. F2 में आपके पास बचेगा कितना? 6, 3, 2, 5. हाँ ठीक है, A is correct. All of you got A. कितने लोगों को A मिला? नहीं मिला किसी को. Understood how A? Yes or no? Please tell me guys. Others? Adriel, Hamza, Krishna, Marita, Priya, and Rehan. Yes, है sir. ना? ठीक है. बस अब ऐसा है ना कि अब मेंस के टाइम में देखिए आपने कितना निकाल लिया. अब आपको इतना हो जाना चाहिए, आपने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखा और आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने आपके पास सराउंडिंग एटम्स तो दिखता ही है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देख के ही पता रहना चाहिए. XeO4 में बताइए नंबर ऑफ वैलेंस, सॉरी, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? XeOF4 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. वेरी Okay. गुड. हाँ नहीं 2 सही है. 2 1 lone pair. हाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा. XeF6 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर, है ना? चलिए ट्राई दिस वन. इसको कीजिए, फिर उसके बाद काफी सवाल हैं और, लेकिन फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाएंगे. ओके, डू दिस वन. वंस अगेन हम एक चीज आपको बता रहे हैं, जो चीज आपको आती है उसी में देखिए कितने सारे सवाल आए हुए हैं, राइट? सो जो चीज आपको आती है उसी में आप स्कोर करने की अभी कोशिश कीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं. कुछ नई चीजों को जानने के लिए आप ज्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिए अपना, ठीक है? सो देयर इज वन थिंग दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आप किसी काम को अगर कर रहे हैं ना तो किसी दूसरे काम को नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग राइट नाउ केमिस्ट्री, ठीक है? यू आर लर्निंग राइट नाउ केमिस्ट्री, यानी कि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे. ओके, व्हाट डज इट मीन? आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तो इज इट लॉस या गेन? तो आप मैथ्स पढ़ी चाहे केमिस्ट्री पढ़ी, दोनों क्या आने वाले हैं आपके पास? जेईई मेंस में आने वाले. अब कोई यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगेगा तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना ना, बिकॉज वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, उसके नॉलेज में तो गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ उसको आगे होगा. कोई मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको देना है VIT का एग्जाम, VIT ट्रिपल देना है उसको, तो वो इंग्लिश पढ़ रहा है. बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हेन ही इज रीडिंग इंग्लिश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसका? वो PCM नहीं पढ़ रहा जो कि मेंस में आने वाला है. ओके, सो द बेस्ट थिंग फॉर यू इज व्हाटएवर नॉलेज यू हैव राइट नाउ,
जहाँ पे थ्योरी आपको और एक्स्ट्रा ना पढ़नी पड़े, थ्योरी रिवाइज करनी पड़ जा सकती है, दैट इज फाइन, बट एक्स्ट्रा थ्योरी ना पढ़नी पड़े और उसी में से आप ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड राइट नाउ जो मेंस का लेवल है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स, अगर आपके एनसीईआरटी में अच्छा कमांड है तो। एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज स्पीड। सो हियर आल्सो विल स्टार्ट विथ ए, उसके बाद बी को देखा जाए, नहीं बी को मत देखिएगा उसके बाद, है ना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लुक एट बी तो उसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपको, या तो आपके पास डी ऑप्शन आ जाए तो सीधा सही हो जाएगा, है ना, ए के बाद आप सीधा देखिए डी को, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं सी और बी से किसी भी एक को, ए डी सी इस तरह से देखिए आप। सर आंसर बी है। आप चैट में भेजिएगा आंसर आपसे। ओके, हाँ हाँ, यस यस यस, करेक्ट मरिता, करेक्ट आश्रित। या फिर जो आपको सबसे आसान लग रहा है उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड हैव स्टार्टेड विद NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव देख के ही हमको पता है कि ये क्या हो जाएगा, टेल मी, NH4 पॉजिटिव इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो लोन पे। हाँ टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना, NH4 पॉजिटिव देख के ही हमको सीधा समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो सी का हमने देख लिया, C4 और एक बार में आंसर आ गया ना, है ना, C4 कहीं और नहीं है, सबसे पहले सी ही देखना चाहिए था आपको, आई वाज बैड, आई वाज रॉन्ग, ये नहीं देखना चाहिए था आपको, आपने सी देखा और उसी में आंसर आ गया, राइट, 3 4 2 2, हाँ चलिए। अच्छा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज थिंग्स। I will wait 5 seconds. 5 4 3 2 1. Okay, hope you have taken the screenshot. चलिए आप लोग कीजिए अभी, which of the following pair of molecules contain odd electron and an expanded octet? Sir, can you show the previous questions options? कौन No, sir, सा? the one before. ये वाला जी, Okay, sir, done. done. Okay, चलिए try this question now. Odd electron molecule, giving you guys 2 minutes, है ना, कंसेप्ट अगर याद होगा किसी को तो वो देख के आंसर बता देगा, एंड एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। No, Marita, I'm afraid that is wrong. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब इसमें एक इन द मॉलिक्यूल, सी आइदर वी हैव बॉन्डिंग पेयर्स और वी हैव लोन पेयर, है ना, तो पेयर्स में होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में एक बेचारा अकेला होगा। मरिता, दैट इज राइट, वेरी गुड। Yes, I got confused between इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड, ठीक है समझ। कैसी गाइस, ये बोरॉन के पास होते हैं कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 एंड सराउंडिंग एटम इज 3, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर में जाएंगे, है ना। NO वाला केस जो ऐसा है, इन NO यू आर गोइंग टू हैव अ ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके।
So B is going to be the right answer. Expanded opt क्या मतलब? Sulfur is making more than 4 bonds. अगर कोई species more than 4 bonds बना रहा है, that is expanded octet. Okay, so NO and H2SO4. Please write this down. Now, moving towards molecular orbital theory. Now, in molecular orbital theory, I hope all of you know that this sequence is very important. Huh? For n that is less than 14 and for n that is greater than 14. So please write this down. इसको लिख लीजिए. When you have n less than 14, then in that case, the lowest energy orbital is what? Lowest energy molecular orbital is 1s. Then you have sigma. Sigma 1 is star, sigma 2 is star, and then we have pi 2px and pi 2pi. Both of these are going to have this equal energy. And after that, the sigma 2pz is going to have higher energy. And then we have pi star 2px and pi star 2pi. Both of them are having equal energy. And then we have pi star 2pz. Now, why does this happen? Because of sp mixing. You just need to know the reason that it is happening due to sp mixing. बस नाम जानना है आपको. Okay, it is happening due to sp mixing. And when you have n that is greater than 14, in that case, you have normal type of energy order. Sigma 1 is star, sigma 2 is star, sigma 2pz, and then pi. है ना? तो sigma की energy क्या होती है? Generally speaking, usually speaking, it should be what? It should be lesser than pi. अगर उसकी energy कम है pi से, तभी तो वो ज़्यादा stable होगा. Okay, so sigma is generally speaking, according to rule, it should be less than. Its energy should be less than pi, and that's why it is more stable. Energy ज़्यादा कब हो जाती है? जब sp mixing होता है. Okay, when there is sp mixing, then the energy of sigma 2pz is higher than that of the pi molecular orbital. And then we have pi 2px, pi 2py, pi star 2px, and pi star 2py. Now, what I have written as 2121. See, when n is equal to 4, 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है, sorry, when n is equal to 14 or less than 14. Equal to sign है 14 का, that means even. Even से आपको याद आना चाहिए 2. ठीक है? Even से क्या याद आना चाहिए? 2. And the option is what? Order is 2121. यहां से यहां तक तो सेम है, यहां से यहां तक सेम. The only difference is इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. So 2 पहले आएगा, even है तो 2 पहले आएगा, and then 21 is same for both of them. जो 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा हो. Now greater than 14 is what? Greater than 14 will be odd. Odd से आपको याद आना चाहिए 1. So 1 पहले आएगा, उसके बाद 2. Okay, I hope this is going to make it easier a bit to remember. Please write this down. Let me know once you're done writing this. अभी लिख लीजिए, इसका एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे. ठीक है ना? वी हैव दिस 3 n2 पॉजिटिव n2 नेगेटिव. उसको हम लोग समझ में आएगा अच्छे से. प्लीज राइट दिस डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. Let me know once you're done, guys.
डन गाइस, लिखिए आप लोगों ने, नहीं लिखा? Done, sir. डन, ओके, चलिए मूविंग ऑन। हम लोग देखते हैं व्हेन यू हैव दिस N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव के लिए, ओके, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, N2 के लिए सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर N2। टेल मी, N इज इक्वल टू, 14. एक नाइट्रोजन में, हाँ 14 होगा ना, एक नाइट्रोजन में 7, दूसरे नाइट्रोजन में 7, कितना हो गया टोटल 14। प्लीज रिमेंबर ये n कैसे आएगा, है ना, ऐसा नहीं हो कि n ही नहीं पता कैसे निकालना है, n विल बी इक्वल टू 14। सो बताइए केस 1 या केस 2, विच केस? दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2, कौन सा केस लेना है, केस 1 या केस 2? Case 1. केस 1, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फिल 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे देखिएगा 8 हो गया, 9, 10, ठीक है, then 11 and then 12। Why? Because both of them are in the same energy level। पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा, उसके बाद पेयरिंग होगा। तो कितना हो गया हमारे पास, 8 और इधर 4, 12, 13 and 14, 13 and 14। All of you understood this? Yes or no? Please tell me the filling of electrons। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से करते हैं। What about others? प्रिया, कृष्णा, हमजा, रेहान, आश्रित। Yes, sir. Yes, आश्रित आपको समझ में आया? Yes. Okay. Now when we talk about magnetic behavior, tell me, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? हाँ गाइस, थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैरा और डाया के बारे में पता हो आप लोगों को। Yes. पैरा और डाया, Half filled, fulfilled. अरे हाफ फील्ड फुल फील्ड आप कुछ भी बोल रहे हैं आश्रित। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। Para. Okay. पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? ऐसे नहीं चलेगा। देखिए पैरामैग्नेटिक में यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। डाया का मतलब क्या हुआ, डाया में देखिए डाया आ गया ना, तो क्या हो गया, ऑल पेयर्ड, सारे क्या होंगे डाया में, पेयर्ड होंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। हाँ जी बताएं। पैरामैग्नेटिक Yes, sir. डायमैग्नेटिक याद रहेगा सबको, ठीक है। तो N2 क्या है आपका, N2 इज डायमैग्नेटिक। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टेल मी। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए, दिस इज बॉन्डिंग, ठीक है, ये भी बॉन्डिंग है, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज आल्सो बॉन्डिंग। टोटल कितना हो गया, 2, 4, 6, 8 और 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 14 थे, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे। हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग, टेल मी, हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग। टोटल 14 था, 10 उसमें से बॉन्डिंग हो गया, तो एंटी Four. बॉन्डिंग कितना होगा, हाँ उधर नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है, 4 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बताइए किसी को याद हो तो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। so the bond order will be 10 minus 4 that is equal to 6 divided by 2 that is equal to 3। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। एग्जिस्टेंस के बारे में क्या है, if you have bond order, if bond order is greater than 0, ठीक है, जीरोस नहीं है अगर बॉन्ड ऑर्डर, तब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर है अगर किसी का, that means there exists a bond between the atoms of one nitrogen and another nitrogen and that is why the molecule will exist। so molecule exist करेगा। got it guys? yes or no? please tell me। इतना समझ में आया सबको? आया ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अब बताइए N2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, करेक्ट है? yes or no? Yes. एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है। अब बताइए नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरा या डाई, Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पी लिख दिया हमने। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, नाउ कितना हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा, N2 पॉजिटिव में आपने रिमूव कहां से किया है, आपने रिमूव किया है सिग्मा 2pz से, ठीक है, यू हैव रिमूव फ्रॉम सिग्मा 2pz दैट इज बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग से एक निकाल दिया तो बचा बॉन्डिंग कितना हमारे पास, 9।
एंटी बॉन्डिंग को कुछ नहीं किया था, तो एंटी बॉन्डिंग उतनी ही का उतना ही 4. अब बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9 minus 5 9 minus 4 इट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, 2.5. ठीक है. एग्जिस्टेंस, यस इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट. N2 पॉजिटिव. N2 नेगेटिव में क्या होगा, पहले आप N2 बना लीजिए. ये N2 था आपका, राइट. N2 में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया. इट इज अगेन पैरामैग्नेटिक. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज आया? नो, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी 10. Now what is the number of anti bonding? Anti bonding में एक इंक्रीज हो चुका है, that is equal to 5. Now what will be the bond order? 10 minus 5, that is equal to 5 divided by 2, that is equal to 2.5. okay, now I am leaving these parts. Compare करेंगे बाद में. Existence, yes it is going to exist because bond order is not equal to 0. Now bond length and bond order में क्या relationship है? Bond length, it is inversely proportional to the bond order. बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट. बिकॉज इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, द मॉलिक्यूल एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर गोइंग टू बी क्लोजर, एंड दैट इज व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, N2 का सबसे छोटा, राइट. नाउ यहाँ कैसे कंपेयर करें, जब यू हैव 2.5 एंड 2.5. Now when you have the same things, then you will compare the number of anti bonding. अगर number of anti bonding ज्यादा, तब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा. ओके, सो इन दिस केस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग किस में ज्यादा है आपके पास, N2 नेगेटिव में ज्यादा है. दैट इज पहले N2 पॉजिटिव आएगा और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, N2 नेगेटिव का हो जाएगा. इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. व्हेन यू हैव, Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन. व्हेन BO is same, then more anti-bonding means more bond length. ठीक है. When one order is same, then more anti-bonding means more bond length. Bond strength will be directly proportional to what? Will be directly proportional to bond order, या फिर हम बोल सकते हैं inversely proportional to bond length. तो bond strength की बात करें तो N2 का सबसे ज्यादा bond strength होगा, उसके बाद N2 पॉजिटिव का होगा, और उसके बाद N2 नेगेटिव का होगा. Bond dissociation energy will be directly proportional to the bond strength. जितना bond strength ज्यादा, if a bond is stronger, that means dissociation will be difficult. तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो N2 में सबसे ज्यादा लगेगी, उसके बाद N2 पॉजिटिव में लगेगी, उसके बाद N2 नेगेटिव में लगेगी. Now tell me, is this clear? Yes or no, please. सब ठीक है? हाँ Yes, जी sir. बताएं. अब देखिए, एक हम आपको चीज बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन आ सकता है आप लोगों को, कि सर N2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर 15 हो जाएगा सर, तो फिर हम लोग केस 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट. कभी आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं कोई चीज और अचानक से आपके दिमाग में आ गया, ओ माय गॉड, N2 नेगेटिव में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 15, तो सर केस 2 नहीं हो जाएगा. नहीं, केस 2 नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन द बेस एटम. ठीक है, N2 को देख के चलेंगे आप. अगर N2 में क्या था, N2 में अगर केस 1 था तो वो केस 1 ही रहेगा विद sp मिक्सिंग, बिकॉज N2 के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और N2 से ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है दैट इज गोइंग टू बी सेम. उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालिए, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालिए. ओके, सो इस किस्से में आपको नहीं फंसना है कि 15 है या क्या है, आप बेस को देखिएगा N2 के बारे में. ओके, चलिए राइट दिस डाउन. इफ यू आर डन प्लीज लेट मी नो. Is everyone done? Yes or no, please tell me. सबने लिख लिया, नहीं लिखा अभी तक? Yes, sir. Done? Anyone still? Is there anyone who is still writing? No, no one is writing. Okay. चलिए ये कीजिएगा खुद से. O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे और O2? टेल मी. 12. कौन 12 बोला? कौन बोला 12? Oh, 8. 8 O2. 16. हाँ, तो केस 1 केस 2 केस 2 होगा, है ना. तो फिल कीजिए इसको एंड देन फिल द होल थिंग. I am going to give you guys 5 minutes will be enough ना. 5 मिनट लीजिए इसके लिए, ठीक है.
one announcement for those who have joined late, and I think this is namely for Ashrit and Rehan, and maybe Hamza also because he has not done some classes. Just a second, guys. Let me just break my thumb and I will talk to you guys. Okay. The announcement is that please start watching the earlier lectures recording because from tomorrow onwards you will be having extra classes. Okay. कल आपका शायद physics का है, and slowly you will be getting extra classes for physics, maths and chemistry also. Okay, so please start watching the previous recordings. जिन लोगों ने भी classes नहीं की हैं उनके लिए है ये, and namely I think Ashrit and Rehan. Okay. Okay. Okay.
guys, all of you filled this? Yes or no? Please tell me. सबसे पहले O2 के लिए भर लीजिए, ठीक है? आफ्टर O2 इट इज गोइंग टू बी इजी. O2 में 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. क्लियर है? ऑल ऑफ यू गॉट दिस फॉर O2. मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक बिहेवियर? Paramagnetic. Number of bonding electrons will be equal to bonding, bonding, bonding and bonding. कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8 9 10. 2 4 6 10 10 हो जाएंगे ना? 10 ना? Yes or no? Yes. 10. Anti bonding will be कितना हो जाएगा? Anti bonding 6. good. Very good. 6. Bond order will be 10 minus 6 by 2. 8. 2. अरे 2 होगा ना? 8 कौन बोला भाई? 10 minus 6 is equal to 4 divided by 2 will be equal to 2. बॉन्ड लेंथ वगैरह बाद में देखेंगे. एग्जिस्टेंस क्या होगी? एग्जिस्टेंस इसकी होगी बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट जीरो. O2 पॉजिटिव में क्या करें? O2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया हमने. कहाँ से निकलेगा ये O2 पॉजिटिव में से बताइए? इट विल बी रिमूव फ्रॉम पाई स्टार 2p x या y, है ना? x और y इनमें से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इक्वल. एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने. अभी भी इट इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कुछ चेंज हुआ है? नो. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज स्टिल द सेम, दैट इज 10. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इट इज इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इट इज इक्वल टू, एक कम हो गया ना, 5 हो गया, तो 10 माइनस 2.5 हो जाएगा. ये एग्जिस्टेंस होगी इसकी. O2 पॉजिटिव में से एक और निकाल दिया हमने, राइट? नाउ वी विल बी हैविंग, दिस इज नाउ डायमैग्नेटिक, है ना? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. Number of bonding will still be the same. Number of anti-bonding will be now 4, and the bond order is going to be what? 3. Existence इसकी होगी. Now in O2 negative क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डाला और एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे. Okay, so we are adding in either 2px or 2py. Now in this case, the magnetic behavior is still paramagnetic, है ना? And then how many bonding electrons? Bonding में कोई change नहीं हो रहा है, so 10. Anti-bonding में एक add हो जा रहा है, that is 5. So this will be again 2.5. और आपके पास existence इसकी होगी. O2 negative में we are adding one more electron here. Now this is going to be what? This is going to be diamagnetic. Number of bonding electrons में कोई change नहीं है. नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में अब हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए. सो इट इज अगेन वहां 2 हो जाएगा ना? नो, राइट? 2 हो जाएगा. 2 हो जाएगा. इज देयर एनी, एक सेकंड, नहीं सॉरी माय बैड. यहाँ पे 10 था, एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया ना, तो 6 से एक ज्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, राइट? नो, 7 होगा ना? Yes. हाँ 7 होगा, माय बैड. सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी नाउ 1.5, है ना? एग्जिस्टेंस तो होगी अभी भी. अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 और ये एग्जिस्टेंस अभी भी होगी. ठीक है ना? बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? O2 पॉजिटिव में हमारे पास, कैसे लिखें इसको? बॉन्ड लेंथ के लिए हम अलग से लिख देते हैं ऐसे. सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट फॉर O2 नेगेटिव, टू नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 नेगेटिव, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव का, उसके बाद 1 पॉजिटिव का, उसके बाद 2 पॉजिटिव का. समझ में आ रहा है सबको? ये सुनो प्लीज, में कहीं. हाँ Yes, जी sir. बताएं. बॉन्ड समझ में आ रहा है ना सबको? बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट रिवर्स. 2 नेगेटिव का सबसे कम, उसके बाद 1 नेगेटिव, उसके बाद 0, उसके बाद 1 पॉजिटिव, उसके बाद 2 पॉजिटिव. बॉन्ड एसोसिएशन सेम हो जाएगा, -1 -0 1 प्लस एंड देन 2 प्लस. ठीक है, चलिए राइट देता हूँ.
जल्दी लिखिए, अदरवाइज जस्ट स्क्रीनशॉट इट अगर बहुत ज्यादा बच रहा है आपका तो। Done everyone? नहीं किया आप Yes, लोगों sir. ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम वेटिंग। 3 2 and 1. According to the molecular orbital theory, the bond order of O2 negative, CO and NO positive is equal to how much? O2 negative का इन्होंने कितना दिया हुआ बॉन्ड ऑर्डर? O2 negative का ठीक है 1 है ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, these 3. Now CO में total number of electrons will be equal to how much? कार्बन में होते हैं हमारे पास 6 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं हमारे पास 8, that is equal to 14. तो केस 1 या केस 2 1. है ना, केस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब लिखिए इसके बारे में, हाउ विल यू राइट दिस? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। ओके, नाउ क्या आएगा, पाई आएगा या फिर सिग्मा आएगा? पाई आएगा या सिग्मा आएगा बताइए? 14 है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई आएगा या सिग्मा आएगा? पाई, पाई 2px और पाई 2py साथ में आएगा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास हो गया 2 और 2 7 8 9 10 11 12, उसके बाद सिग्मा 2pz में 2। व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर नाउ, टेल मी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। तो ए और डी ऑप्शन बचा है अभी भी। NO पॉजिटिव, अच्छा NO पॉजिटिव में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NO के लिए पहले बताइए कितने? नाइट्रोजन में होते हैं हमारे पास 7, ऑक्सीजन में होते हैं हमारे पास 8, दैट इज इक्वल टू 50। तो केस 1 और केस 2 बताइए, केस 1 और केस 2। Case 2. Case 2. केस 2 में आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा और पाई वाला बाद में आएगा, एंड इफ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 2, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2। Li2O में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? इन Li2O what will be the charge on oxygen? It will be O2 negative. Na2O2 में क्या होगा? Na2O2 में बताइए क्या होगा चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर? What will be the charge on oxygen? O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। और KO2 में, KO2 में क्या होगा बताइए? O2 minus. O2 माइनस, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? ओके मरिता, देखते हैं। O2 negative is what? Yes, Adriel. I think that is correct. O2 negative क्या होगा आपका? O2 negative will be डाया या पैरा बताइए? O2 negative पैरा होगा ना, O2 negative पैरा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, डाया, है ना। और O2 negative क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में आप 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन डाया, है ना। 1:2 2:2 करके देखना है O2 negative में। ओके, सो द ऑप्शन विल बी पैरा डाया डाया, पैरा डाया डाया, डी ऑप्शन। ये बताइए, what is the number of unpaired electrons in the highest occupied molecular orbital of the following? N2 में क्या था, 0। N2 में अगर 0 है, उसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 will be unpaired, right?
O2 में इफ यू रिमेंबर देयर वेर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब 2 में से आपने यहाँ पे आपके पास कितना था, 2 था। 2 में से आपने एक निकाल दिया, कितना बच गया आपके पास, एक बच गया। तो 0 1 2 1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 0 1 2 1। हाँ, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, यस और नो। N2 में हमारे पास कितना था, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनपेड हो जाएगा। O2 में हमारे पास कितने थे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट व्हाट, 1 अनपेड। तो 0 1 2 1। ये बताइए जरा। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये तो किया है ना हम लोगों ने अभी, ये तो किया है बिल्कुल हमने अभी। आई थिंक दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। यस मरिता, सही है। देखिए O2 के बारे में एक चीज हम आपको बता देते हैं। इन O2 इफ यू आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ओके, एंड इफ इन O2 इफ यू आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस O2 पॉजिटिव विल बी हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा ना। हाँ, यस एड्रियल, करेक्ट, ए। O2 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 2 नेगेटिव। यस रेहान, करेक्ट। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिमिलर। ठीक है, सो टेक दिस एज होमवर्क, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? I hope you're done. Now take this as a screenshot. देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या पढ़ाया आपको, 2 केसेस पढ़ाए, उसके बाद नाइट्रोजन का पढ़ाया और ऑक्सीजन का पढ़ाया, है ना। और उसी में से देखिए कितने सारे सवाल।